Hello बच्चों, let's read this question. Consider an electron in the nth orbit of a hydrogen atom in the Bohr model. The circumference of the orbit can be expressed in terms of the de Broglie wavelength lambda of the electron as these are the following options given to us. So सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड जो ये क्वेश्चन है इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. So let us write. Key concept of this question is quantization of angular momentum. Angular momentum. And according to the question, Bohr model की भी बात की गई है and de Broglie wavelength की भी बात की गई है. First of all, let us see the concept which was given by the Bohr. According to the Bohr, जो angular momentum है of the electron which is orbiting around the nucleus that is quantized. जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस दैट रिवॉल्व इन द फिक्स्ड ऑर्बिट एंड इसका एक क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम होगा एंड ओनली वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस विच हैव द एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi. So we can write electron revolves around the nucleus only in those orbits only in those orbits for which the angular momentum for which the angular momentum is equal to an is equal to an integral multiple of integral multiple of h upon 2 pi h upon 2 pi. So जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला रहता है दैट इज mvr. So it will be equals to the nh upon 2 pi and जो n है that represents the fixed orbit or the number is whole number 1 2 3 and so on. And de Broglie extend this concept of the angular momentum according to de Broglie hypothesis. De Broglie hypothesis जो wavelength है that is equals to the Planck's constant divided by momentum and momentum is equals to the product of m and v that is the mass and the velocity of the electron, and this lambda is termed as the de Broglie wavelength. According to the de Broglie hypothesis जो matter है that has the both particle as well as the wave nature, and जो wave nature है particle का that is quantified by de Broglie wavelength that is lambda is equals to h upon mv, whereas this h is the Planck's constant, m जो है that is the mass of the particle और v is the velocity of the particle. और अभी हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं so we can consider this mass and velocity for the electron. And according to this जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है that also has the wave nature. So जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा इस तरह से उसका वेव नेचर होगा अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. कुछ इस तरीके से वी कैन से इट कैन बी रिलेटेड एज जब हम किसी स्टेशनरी स्ट्रिंग को प्लग करते हैं देन द नंबर ऑफ वेवलेंथ आर एक्साइटेड इन दिस वे. दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड वी कैन से दिस एज द लैम्डा. एंड स्टैंडिंग वेव्स जो फॉर्म होते हैं that are only formed
when total distance जो travel होगा by a wave is an integral number of the lambda. So we can write standing waves are formed only when total distance traveled distance traveled by a wave is an integral number of wavelength lambda which is the de Broglie wavelength. So जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में है एंड दैट हैज द वेव नेचर और सर्कमफ्रेंस जो होता है सर्कल के लिए दैट इज 2 पाई आर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू द n lambda और जो n है it represents the nth circular orbit of the radius r and so this has been derived for the de Broglie wavelength and according to the question हमें बताना था जो circumference होता है orbit का can be expressed in term of the de Broglie wavelength of the electron that is equals to the n lambda. So जो हमारा final answer होगा that will be n lambda. According to the given option, this is the option D. So the final answer is option D, n lambda. Let us mark the option D as the correct response. और जो हमारे पास option A, B and C है, these are the incorrect one. Hope the solution was understandable. Best of luck.